Hey guys, so today we'll be discussing the question called finding MK average. So let's understand that how will we solve this given question. Now the question says that you need to find you're given two integers m and k first of all, and you're given a stream of integers. Now you need to calculate the MK average. How will you calculate it? Now the question says that if the number of the element is less than m, that means the MK average is -1. Okay? Otherwise, let's say that you have enough number, you have m elements. Now the question says that you remove the smallest k elements and the largest k element, which is given in the input, and then you take the average. Let's understand with a given example. Let's say that कि मेरे पास एक input आया and I'm directly going to start with m is equal to 6, let's say, and k की value कुछ 2 मान लो, ठीक है? And just assume that I'm not directly starting with the insertion पहले 1 आएगा 2 आएगा. I'm just directly assuming कि हमारे पास 6 एलिमेंट आ गए in this order. Let's say कि 4 आया पहले, 5 आया, then 1 आया, then 2 आया, then 3 आया and 4 आया. Now ये ऑर्डर में आया कुछ एलिमेंट्स. Now इसमें क्या करना है ना, ये क्या बोलता है क्वेश्चन कि पहले इसमें से टॉप के एलिमेंट निकाल दो. ठीक है, टॉप के एलिमेंट क्या हो गए 4 and 5. इसमें से स्मॉलेस्ट के एलिमेंट्स भी निकाल दो. ठीक है, स्मॉलेस्ट के एलिमेंट भी निकालो, क्या हो जाएगा 1 and 2. 1 छोटा है ना, 2 छोटा है, और बड़ा कौन सा है 4 and 5 है. कोई भी मन निकालो, पर कोई भी 4 निकालो, सॉरी, फर्क नहीं पड़ता. सो यू रिमूव दिस एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद 3 and 4 एंड उसका एवरेज निकाल के रिटर्न कर दो जब भी कैलकुलेट एमके एवरेज बोला. तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 3. मतलब इंटीजर वाइज बोल रहा है क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लेट्स से दैट हाउ वी कैन इफेक्टिवली सॉल्व इट. तो पहला चीज दिख रहा है कि यार मेरे को निकालना है टॉप के और बॉटम के. तो उसके लिए मैं कोई दूसरा इसको सॉर्ट कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? हाँ भाई, सॉर्टिंग में तो आराम से हो जाएगा मेरा काम. तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल सॉर्ट इट. सो सॉर्टिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. Let's say that you sort this. Let's say that initially using an array. Let's start with array. You initially used an array and then you try to sort it out. Hey, did I miss some elements? One tha, two tha. No, I did not miss. My bad. So, what happened here is that key array you're given. Now, what you did was that you sorted this array. Now, after sorting this array, you remove this part and then you remove this part. Okay, and then you can easily calculate this thing. So far, so good. But I will then introduce to a new problem. I'll make you think. The question, the video is not about like how to solve this, how to code this. The video is about how to make you think. So let's understand the new element 8 is being added over here. Now, what happens if 8 gets added? So we know that we need to kick out some element from this side. But तुमने क्या कर दिया? What you have done? You have eventually sorted this thing. So you lose the context of which element arrived first and which element was okay. जैसे कि यहाँ पे कैसा था कि we knew कि 4 would have come here ना. We knew 4 would have come over here. So that's why if we had maintained this original data structure, we could have easily removed 4 and then we insert 8. ठीक है? Then we insert 8 and again we sort it out and then again we calculate it. So you can do that. So I mean you can do this because then what happens is that you create a new array from the original data structure. You do not tamper it. You in fact create a new array. You sort that new array and then you remove the top k and then you remove the bottom k and then you return the average. This you can do. But don't you think that is a pretty expensive operation? Because at the end what you're doing, your first thing is that key for each element which is adding again, you're sorting it out, which takes away the n log n time complexity. And the thing is that key for each element, for each original data structure, you are creating a new n data. So the space complexity is also n, right? And this will be repeated for how many times they calculate like the total m values which are being added. Like ki मान के चलो कि it run for a stream of integers, right? The stream of integer it will run. So we know that ki we do not know how long the stream will run. Maybe 10 of thousands it can run for this thing. And yeah, they have said that ki देखो 10 to power 5 calls है, 10 to power 5 calls for the इतने elements. So eventually जब तुम्हारा time complexity क्या हो जाएगा 10 to power 5 in the worst case
n log n, है ना? Because you're eventually sorting it and then you're removing this. Can we do something better? By better is that can we do this something in O of n? And can we uh, try to get rid of this extra? Because देखो space complexity कितना हो जाएगा? For the original data anyways you're using n, and for the other one also using n, so overall time complexity कितना हो गया? O of 2n. हालांकि sorry, space complexity 2n हो गया. हालांकि it does not matter, you would have initially ignored this too, but still the space, it's space heavy solution. अगर if the value of n is large, then you will end up taking larger contiguous elements, basically your new array. So let's see how we will solve this. So now note one thing. If somehow I can get a quick view of which element would have come first over here, then I would have easily solved this out. है ना? So let's say which data structure gives me the first n? Obviously Q. तो हम क्या करते हैं कि let's store this information in Q. That 4 arrived here first, 5 arrived here first, 1 arrived here first, and 3 arrived here first. ठीक है? I will tell you how will we solve this one by one. I have introduced you two problems. Let's see. So अब क्या होगा ना कि अब what you can do is that कि when you have to remove, let's say that ये array n से कितना, n is equal to 6 से initialize था. Array n is equal to 6 से initialize था. Now a new element 8 is being added over here. So now you need to remove element. So what you can do is that you can remove this 4 element, which you can quickly assess from the queue. ठीक है? That you can do, and then you can insert a new element. So in this order, we do not need this new data structure. What we can do is that कि using this queue, we can quickly scan कि देखो 4 कहाँ पे है, 4 को निकालो, ठीक है? And after finding 4, we remove that and just place just जो empty slot create हो रहा है, we add a new element to that, ठीक है? That is one thing we have solved. So that's why we do not need an extra array now. If it makes sense to you guys or not. Because now we have used a queue data structure to solve this out. Okay, and the queue will ensure कि ordering maintained है उसमें. Now let's understand कि it's still there is one problem which is still remaining, because after, let's say that we now remove 4 and now we insert 8 over here. Let's say that we inserted 8. Now I'll introduce to you a new problem. Again you have to sort this thing. Again you have to, you have saved, you have no doubt कि तुमने अपना space complexity reduce कर दिया, क्योंकि at every time you do not need to create a, there is no overhead of creating a new data structure of O of n and then calculating it. ठीक है? You have removed the, but still ठीक है, the space complexity, you might question me that कि hey, still you have created a queue, but listen, understand this fact that now we have a more better way to assess the first element which is being added. ठीक है? Now we have more better way. Otherwise what would have happened now कि you would maintain the original also, and you would have to maintain the sort, you maintain the original, and you copy the remaining n minus 1 elements, and for this n minus 1 element, or basically let's say that ki you remove this 8, or sorry 4, and you added 8 over here, and then again you do this. So again we are not we can use array definitely, but I will now tell you that what is the benefit of using a queue over this side. Okay? I know it might sound a little bit confusing, but stay with me for a while. Stay with me. So what has happened is that now we know that 8 has been added. Now since 8 has been added, we know that again we have to sort this thing. हमने sort किया इसको 1, 2, 3, 4, 5 and 8. So again expensive तो है ही, क्योंकि again we are sorting it out. So that means we need to find a better approach. How do we find a better approach? Okay, let's break down this problem further. So देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, does not care. The question is saying is that you need the top, sorry, smallest k element. First of all, I'll write in this fashion, smallest k, and the question is saying that you need the largest k, है ना? And बीच में there will be some elements over here. Let's say that there are, यहाँ पे अगर k elements है, यहाँ पे k elements है, and if the overall is m elements, how many elements will be here? M minus 2k. है ना? There are k elements over here, there are k elements over here. Let's say if we break this problem into 3 data structure, let's call it ds1, ds2, ds3. Okay, let's call it this way. Now if we have broken it down, let's understand one thing.
if a new element comes, where we are going to insert it. Okay, understand this fact. Where we are going to insert it. Let's say कि कौन सा एलिमेंट लेते हैं, चलो ए लेते हैं, जेनरिक रखते हैं, ठीक है. एंड लेट्स से दैट ये स्मॉलेस्ट केस, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको सॉर्टेड फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, लार्जेस्ट के को भी सॉर्टेड फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है. लेट्स से समहाउ, एंड वी विल कम टू दैट व्हाट डेटा स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू यूज. And I want you to think. Then only you can eventually come up with your own thinking, critical thinking capability. So let's say that A add कर रहे हैं. Okay. How will we say that A is a capable candidate for this smallest K? For the smallest K, how will we say that A is the capable candidate? So you assess the smallest element over here. Let's say the smallest element was S, and you find that A is smaller than S. तो A का तो बनता है ना भाई इधर जाना. A has the right to go over here. I said that S is the smallest element and A is even smaller than that. So A can go over here, definitely. Okay? Now let's understand one more thing. Same thing applies for the largest also. Largest may be, there will be certain element, call it L. Now again an A exists. If A is greater than L, don't you think A will be the candidate to go over here? And L का मतलब क्या होता है कि it's the smallest element of this largest. मतलब कि ये एक ऑर्डर में स्टोर रहेगा. ठीक है, L1 सबसे छोटा होगा, L2 के बाद आएगा, K आएगा इसके बाद. तो L1 क्या है कि L1 is the smallest element out of this largest K. And we compare this thing and we know that A is greater than L. So A is the rightful candidate over this side. है ना? That's how we are going to maintain it. So don't you, now you will come to me and say that, hey, तुमने तो ये काम कर दिया, you have done this, but what we have done now, understand, if we are adding element to these either largest and the smallest, you're increasing the size. So if the size was K, if you have added element over here, the size will increment by 1. Then we need to do something now. Okay, if you have added element over here, then also we need to do something, है ना? Obviously क्या कर सकते हैं, we have to remove element. So which element do you think we need to remove? Think about, अगर smallest k में ज्यादा elements हो गए हैं तो कौन सा element तुम निकालने की सोचोगे? Think about it. You will remove the largest element over here, क्योंकि ये क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेंटेन कर रहा है. अगर इसका लार्जेस्ट एलिमेंट an है तो इसको पॉप करो और इधर डालो, इसको पॉप करके इधर डालो. ठीक है, m-2 पे there is no constraint on m-2k. The question is saying, strictly saying, is that your smallest and the largest should be within the k range. Okay, it should not exceed k plus 1. So what we have done is that from the smallest we selected the largest and put in this m-2k. Same thing for this. Obviously largest k में you cannot select lk and push it back here, that will become incorrect, है ना? So what you do, you select the smallest element after. देखो, अगर मान के चलो लार्जेस्ट की भी साइज k plus 1 हो गई है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, पहले हम लोग क्या डिस्कस रहे थे कि केस 1 क्या था कि स्मॉलेस्ट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. अभी केस क्या है कि इसकी k है, अब इसकी k plus 1 हो गई है. अब कैसे सॉल्व करेंगे? So now we will pop some element. Obviously we can't pop the largest because it does not make sense to insert largest. m-2k क्या कर रहा है कि हमेशा it's maintained in an order where the value lie between the greatest of the smallest k and the lesser than the largest k. So in this way we can ensure that okay, m-2k contains the middle elements. If we combine this entire thing now, if we combine this entire thing, it will eventually lead to this only. But we do not care about the ordering inside it. Okay, अगर यहाँ पे k elements है तो यहाँ पे कुछ order matter नहीं करता. We are happy with that. So we take the smallest element out of the largest L1 and we insert it over here. ठीक है? So after, so हुआ क्या कि if there was any imbalance, we tried to restore the imbalance. Using this operation. है ना? So this is what the question was saying. So now you tell me that which data structure will be most viable for this one. Obviously, we need some, there can be multiple duplicate also, understand this fact. So multiset makes more sense because multiset will store in a ordered where it is in a sorted format. And if I want to easily assess the begin will tell me that smallest one. So it makes more sense कि we use the multiset one.
मल्टी सेट यूज करना है, ठीक है। ये तक तो क्लियर हो गया हमारा। Okay. So now we have understood that ki how we are adding elements. How we are adding elements. Okay. We are adding elements based on the values which are present in the smallest k and the largest k. And now due to that, there might be some issue where the smallest k and largest k will become imbalanced. So now we need to remove some element. But now I will introduce to you a new problem. देखो, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, एक न्यू एलिमेंट ऐड करने की वजह से भी हो रहा है। बट डोंट यू थिंक if there is a new element which is added, I'll tell you that, guys. Let's say that कि एक न्यू एलिमेंट आ रहा है, हमने तो ये डिस्कस किया। अभी हमने ये कहाँ डिस्कस किया कि एक एलिमेंट जा भी रहा है ना। सो अब क्या होगा ना, अब क्या होगा कि अगर ये एलिमेंट निकल भी रहा है, नाउ वी नीड टू हैंडल दिस एज वेल, एंड उसके वजह से भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा। देखो, फर्स्ट इम्बैलेंस गॉट क्रिएटेड, कैन बी क्रिएटेड विद द न्यू एलिमेंट एडिशन, ठीक है। एंड द न्यू एलिमेंट गेट्स एडेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वी नीड टू रिमूव दिस previous the first element also. So how do we handle this? What we have to do again is that कि अब इस गिवन केस में हो सकता है कि जो 8 एलिमेंट है, हो सकता है कि ये इधर प्रेजेंट हो, है ना। हो सकता है कि ये 8 एलिमेंट इधर प्रेजेंट हो। तो अब क्या हो जाएगा ना कि देखना, अब इसका साइज हो जाएगा k-1। देखो, तुमने इंसर्शन कर दिया, ठीक है, मान लो कि इंसर्शन कर दिया। एंड okay, I think so I forgot to discuss one more last case. Let's say that कि if the given a, हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों कि एक चीज मैं बताना भूल गया, माय बैड। ए एलिमेंट नाम, जो तुम्हारा ए एलिमेंट है, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। अगर इफ इट कैन नॉट गो टू द स्मॉलेस्ट, इफ इट कैन नॉट गो टू द लार्जेस्ट, वेयर इट विल गो? ऑब्वियसली टू द वन साइड। विच वन साइड? इट कैन गो टू द मिडल एलिमेंट, ठीक है। इट विल गो टू द मिडल एलिमेंट। अरे यार, ड्रॉ जा। सो ए इधर भी जा सकता है, ठीक है। आई फॉरगॉट टू डिस्कस दिस। सो नाउ इट बिकम्स क्लियर कि कैसे हमने हैंडल किया। सो वी नो दैट कि लेट्स से इस पे ए डाल दिया हमने। अब क्या हो सकता है ना कि नाउ देयर इज नो इम्बैलेंस, इसका भी के है, इसका भी के है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना यार, अब मैं बता रहा हूँ। अब जब तुम 8 रिमूव कर रहे हो, 8 रिमूव कर रहे हो, मान लो कि 8 लार्जेस्ट के में है, तो अभी इधर से तुम एरेज ऑपरेशन करोगे। कैसे करोगे? यू विल फाइंड 8 इन दिस लार्जेस्ट मल्टी सेट एंड देन यू विल रिमूव दिस एंट्री। बट दिक्कत क्या हो जाएगा ना, उससे क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अब इसका साइज हो जाएगा k-1। नाउ द साइज हैज बिकम k-1, यू नो दैट दिस विल रिक्वायर न्यू गाय। मतलब मुझे रिप्लेनिश करना पड़ेगा इधर जाके। एंड हाउ डू वी रिप्लेनिश? फ्रॉम आवर इमीडिएट नेबर। वी टेल नेबर, हे, आई नीड योर हेल्प। m-2k will say, oh, what help you need? Neighbor will say that, hey, I there was a recent loss and I need to replenish my k elements. So can you give me element? m-2k will say that, okay, I will give you my best candidate, which is the end candidate, and I will give it to you. Okay. Now हो सकता है कि when we are removing entries, we can remove the entries from this side as well. ठीक है, अभी तो हम लोग largest k हो गया story. Same story will happen for smallest k as well. There will be some extra entry, sorry, k-1 entry over here also. ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि m-2 से k से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हे, कैन यू प्लीज गिव मी सम एलिमेंट्स? m-2k will say, okay, I'll give you my elements. Which element do you think is the most viable? Begin. We give the begin to this k. So चार कंडीशन तो आ ही गए हमारे पास, ठीक है। चार कंडीशन कैसे थे कि इसका साइज k+1 हो सकता है, यहाँ पे m-2k हो सकता है, और यहाँ पे k हो सकता है। सेम स्टोरी इधर हो सकता है, k हो सकता है, m-2k हो सकता है, एंड k+1 हो सकता है। सेम स्टोरी इधर हो सकता है, इसका k-1 हो सकता है, इसका m-2k हो सकता है, इसका k हो सकता है। सेम स्टोरी, k हो सकता है, m-2k हो सकता है, और इधर हो सकता है k-1। सो ये चार केस आ गए हमारे पास, ये चारों केसेस को हैंडल करना है। और हमें पता है कि इधर फिर से अगर रिपीट करूँ, इधर एक्स्ट्रा हो गया तो इसको दे दो, इधर इधर एक्स्ट्रा हो गया इसको दे दो, इधर कम हो गया m-2k से मांगो, एम इधर कम हो गया m-2k से मांगो। दैट्स इट गाइस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बस आपको बस एवरेज कैलकुलेट करना है इसके बाद। एंड देखो, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू नाउ, हमने तीन चीजें डिस्कस की, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की एक्चुअली। तो क्यू मेंटेन करना है, मल्टी सेट मेंटेन करना है, तीन मल्टी सेट आएंगे,
एक स्मॉलेस्ट का, मिड का और लार्जेस्ट का। फिर हमें क्या करना है, एंट्री इंसर्ट करना है। एंट्री कहाँ से इंसर्ट करेंगे, सबका स्मॉलेस्ट कंपेयर करके। पहले स्मॉलेस्ट इसका कंपेयर करेंगे लार्जेस्ट का, एंड सॉरी स्मॉलेस्ट का। पहले तो ए एलिमेंट, अगर नया एलिमेंट आ रहा है तो इधर देख सकते हैं, क्या इधर इंसर्ट कर सकते हैं या तो इधर इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर चेकिंग दैट वी हैव टू डू इरेज ऑपरेशन एज वेल। नाउ इरेज ऑपरेशन भी करेंगे। इरेज ऑपरेशन में क्या करेंगे, जो एलिमेंट में मान के चलो कि जिस कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में मिल गया, मान लो कि 8 कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में हो सकता है, इट कैन बी ओवर ईयर ईयर ईयर, वी विल फाइंड 8 इन ऑल दीज मल्टी सेट्स, and after finding it we will erase it. And after doing insertion, erase everything, what we need to eventually do is that कि we need to rebalance it. And rebalancing में 4 cases आ सकते हैं, ये वाले given cases हैं। And after doing a rebalance, that's it. So you might notice that I had directly started this question with directly m elements, है ना? But we have not initialized it. I will tell you because अभी कैसा है कि हमने, तुम पूछोगे कि how will we initialize the smallest k, how will we initialize the largest k? So here comes the catch. Here comes the catch. What we can eventually do is that कि to initialize this thing ना, what you can do is that कि first सारे element mid में डाल दो। पहले अगर elements m तक नहीं पहुंचे हैं ना, if the number of the elements which are added, अगर तुम्हारा mid का size is not equal to m, sorry, is not equal to m, you can keep inserting elements here. After that what you can do is ना, after that you can rebalance it, मतलब कि you can rebalance it as long as the size, देखो हमने क्या किया, do not care about the bottom k and the top k, do not care about that. What you do is that you just insert element in the mid and then you apply the rebalance operation, then you replenish the lowest one, then you replenish the highest one, ठीक है? And how will we do that, I will show you in the code actually. अब code दिखाना पड़ेगा तुम्हें, अब बिना ज्यादा confusion हो जाएगा। And how do you maintain the average? So देखो एवरेज क्या होगा ना, m-2 का ही एवरेज होगा। सो ऑब्वियसली इसका जो पूरा सम है डिवाइडेड बाय m-2 के। अभी इसका सम कैसे इफेक्ट होगा वो देखते हैं। देखो अगर यहां से कोई एलिमेंट m-2 के में आ रहा है तो एवरेज विल इंक्रीज, है ना, एवरेज विल इंक्रीज। सो इफ मिड जो हमारा सम है उसमें सम प्लस जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसका कर देंगे। अगर m-2 के में राइट साइड से एलिमेंट आ रहा है तो भी एवरेज विल इंक्रीज। What will happen if the value is, if we are removing some value from this, then we have to recalculate it, we have to remove that entry from the mid, from the data variable, and then we have to push it to the left hand side. Same applies for the right hand side. So the code actually, now I do not want to show you the कोडिंग सोल्यूशन, मतलब ऐसा होता है ना कि लोग डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करते हैं, नो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई टोल्ड यू ना हमें क्यू चाहिए सीधा। पहले तो डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, वी आर मेंटेनिंग अ क्यू, देन वी आर मेंटेनिंग अ मल्टीसेट, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग अ क्यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टोर, एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द क्यू इज लेस देन इक्वल टू m, वी आर गोइंग टू कीप इंसर्टिंग दिस इनटू द मिड। एंड हमने एक मिड वेरिएबल मेंटेन किया, द मिड वेरिएबल विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज। So until we have reached the size m, we are not going to initialize it. मतलब यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, जैसे ही m पहुंच गया we need to initialize it. Now what I mean by initialization, what we are going to do is that we are going to remove the k smallest element of the mid, ठीक है? You can read this dude. I'll just telling you the algorithm. I mean coding is just a expression of your thoughts. अगर तुम्हारे mental thought clarity है तो तुम कोड कर सकते हो, वरना कितना भी कर लो, कुछ नहीं कर लो, कितना भी वीडियो सोल्यूशन देख लो, कितना भी कोडिंग देख लो, नहीं होगा। You never be able to do it. So you remove the k smallest to low and you remove the, then you distribute the elements to the this side, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो, पहले अपने आप अपना जेब भर रहे हो, फिर अपने बाजू बाजू वाले को दे रहे हो, एज सिंपल एज दैट। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू ना कि अभी क्या बचा, अभी देखो अगर ये इनिशियलाइजेशन हो गया, नाउ तो दो ही कहानी बचता है। नाउ विल बी इंसर्ट एंड देन विल बी रिमूव एंड देन विल बी रीबैलेंस। तीन चीजें याद रखना है इंटरव्यू के बाद, you can insert, you can erase, and then you will rebalance it. And how will you insert? I had told you over here, देखो we will compare the smallest element from this side and check if the num is more smaller than a low dot begin. Same thing applies for this side as well. For the, if the num is greater than, then high is the more appropriate candidate, otherwise mid is the more appropriate candidate. That's why we say insert. Now we have to remove the old entry, that is we take the front value of the queue, we pop it, that means we erase some value. And when we are erasing it,
इरेज वी आर इरेजिंग इट, ठीक है। सो इरेज में क्या बताया था मैंने कि यू जस्ट हैव टू इटरेट ओवर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर एंड सी कि where this number is present. If the number is present in low, you remove from that. If the number is present in high, you remove from that. And if the number is present in middle, you remove from that. As simple as that. Now the last thing is the rebalance. Rebalancing कुछ नहीं, I do not want to go over again. यही चीज लिखा है बस in a this format. ठीक है, सेम ही चीज है डूड, सेम चीज है, कुछ नहीं, रीबैलेंस मतलब यही कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल गाइस. इफ यू हैव अ क्लियर मेंटल थॉट ना, you can easily crack this thing, you can easily crack this thing. So that's it guys, I hope you enjoyed the video. Thanks.